Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. We are starting a panel discussion. So recently I was reading a book, Generation M by Shamila Jan Muhammad. She was mentioning about the young Muslim women across the world and how they are restructuring the narrative regarding Muslim women. For so many years, it has been narrated or it has been discussed as this oppressive, stereotypical image of women. And suddenly, there is an emergence put forward by the young generation, starting from the millennials and the Generation Z now. And how they are changing this narrative is pretty interesting. Mostly, we say that a lot of discussions are happening about Muslim women, about their attire, about their position in the family, gender roles and everything. But it is not often spoken to them. These narratives or the issues are not spoken by, are not narrated or try to be discussed to the Muslim women, even though all these discussions are happening about them, their stand is not visible or their contribution to the discussion is very limited. So the Generation M focuses on elaborating these discussions by putting forth what they have to say. And that is not done by specifying that this is our narrative, but that is done by being present at different wakes of life, in different professional roles, in different discussions, in different platforms, the online and offline platforms. So this is a positive aspect regarding Muslim women in the last decade especially, where they, along with their attire, along with their religious practices, with their beliefs, they have come forward and put forth their statements, their roles, what they have to say, without specifying that this is our issues or this is our challenges. Simply being present at these positions, at these roles and at these areas in the society itself is making a change. So even in the panel discussion, we are trying to put forth this idea how Muslim women are changing the history, are changing the stereotype regarding Muslim women by simply being present with their powerful positions and with their potential. So to start with, we have three renowned persons who are established in different areas, starting with Uzma Nahid Sahiba, initiative ICRA International Women's Alliance. With that alliance itself, you have created the economic development of Muslim women so prominent. How financial development is important for women. We know that historically Muslim women are known for being entrepreneurs, starting from Khadija radiallahu anha, how finance is part of women. But at the same time, over the years, it was considered that Muslim women doesn't have that opportunity or doesn't have that capability to be financially independent. Or if they are becoming independent, that is suddenly considered as deconstructing the family role. Once the woman has become financially independent, she won't no longer be able to take care of the family, or she'll forget her family responsibilities. So what is the balance that you feel Muslim women has earned in the recent years, especially with the developmental opportunities and the workshops that you were conducting? What is the change that Muslim women has brought forward along with the financial development? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल इंग्लिश में है, मैं जवाब उर्दू में दूंगी, आप तो समझेंगे ना सब। मुस्लिम विमेन का जो एक नया सिनेरियो है कि इस सदी में उन्होंने चेंजेस लाने की कोशिश की, जिसमें फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट उनका। तो मैं पर्सनल लॉ बोर्ड में भी रही हूँ और भी बहुत सारी तंजीमें थी जिसमें मैं रही हूँ, और कई जगह, कई मुल्कों में हमने देखा कि मुसलमान औरतें जो हैं बहुत ऑर्गेनाइज वे में, बहुत कहना चाहिए मॉडर्न स्टाइल में काम कर रही हैं, हिजाब के साथ और इस्लाम के सारी वैल्यूज़ के साथ।
یہ چیز ہم نے انڈیا میں شروع کی کہ مسلمان عورت جو بورڈ میں رہنے کے بعد جو مجھے بہت ساری جو سماجی مشکلیں تھیں، پریشانیاں تھیں، وہ چاہے ساس کی حیثیت سے ہو یا بہو کی حیثیت سے ہو یا کسی قریب فیملی کی حیثیت سے ہو، میرا اپنا تجربہ یہ تھا کہ ان کو اگر فائنینشلی انہیں اسٹیبلش کر دیا جائے تو ان کے تقریباً سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ ایک سوچ سکتا ہے. تو ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کو ہم بانٹ کے تھوڑا تھوڑا بانٹ کے اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس سے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اسنا جو ایک بہت مشہور آرگنائزیشن ہے امریکہ میں، تقریباً 30 سال سے کام کر رہی ہے، کانفرنس اس نے کی، اس نے ایک سروے پیش کیا. سروے تھا کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں صاحب نصاب، اگر وہ اپنی ساری زکوٰۃ ایک جگہ جمع کر دیں اور پوری دنیا کے مستحقین کو بانٹ دیں، تو یہ انہوں نے رزلٹ بتایا کہ صرف 1 سال میں ہر مستحق شخص جو ہے، ہر ڈیزرونگ شخص جو ہے، وہ $53,000 کا مالک ہوگا. یہ اسلام کا ایک بہت عجیب و غریب نظام ہے زکوٰۃ کا، لیکن ہم اس کو طریقے سے نہیں کر رہے ہیں. اس لیے تو ہم نے کیا کیا ہے، آئیوا کے تھرو، جو یہ اقرا انٹرنیشنل ویمنس الائنس جو ہے، اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سیلف ہیلپ گروپ بنائے ہر جگہ، ہر شہر میں، اور اس کے بعد گروپ کی شکل میں ان کو ہم نے اسٹیبلش کیا. ایک بزنس دیا ان کو اور اس بزنس کا تھورو نو ہاؤ انہیں سمجھایا. میں بالکل اس کے لیے اگری نہیں ہوتی ہوں کہ ایک شخص کی مدد کر دی جائے. میں کہتی ہوں کہ آپ تقریباً 5 لیڈیز کم از کم لائیے اور مجھ سے پوچھئے کہ میں ان کو کیا سجیسٹ کر سکتی ہوں. ایک لیڈی جو ہے وہ پرچیز کرے گی، ایک لیڈی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ پارٹ دیکھے گی، دوسری لیڈی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فائنانس مینجمنٹ کرے گی، اکاؤنٹس دیکھے گی، اور ایک جو ہے مارکیٹنگ دیکھے گی. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ خود ہی مینوفیکچرر بن جائیں اور خود ہی مارکیٹنگ کر لیں اور خود ہی سب کچھ بن جائیں. اسی لیے ہم فیل ہو جاتے ہیں. تو جو بھی کام ہے اسے بہت طریقے سے سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے آج الحمدللہ ہم نے اسپائس فیکٹری بنائی ہے، میرا روڈ میں ہے. اسی کے ساتھ ایک گارمنٹ فیکٹری ہے، ہینڈی کرافٹ کے پورے سینٹرز ہیں ہر علاقے میں، ہر شہر میں ہمارے گروپس کام کرتے ہیں. اور ان کی یہ $1 بلین انڈسٹری ہے پوری دنیا میں جو اپریشیٹڈ ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں سے بے شمار زیادہ تر جو آرٹ اینڈ کرافٹ ہیں وہ مسلم عورت کے ہاتھ میں ہے. مسلم عورت خود نہیں پہچانتی کیا ہے. میں لاسٹ میں اس کے بارے میں کہوں گی کہ ایک بار صابو صدیق کالج میں جب ہم نے 23 کورسز لانچ کیے تو میں ہر مہینے ایک فیشن ڈیزائنر کو بلاتی تھی، الگ الگ فیلڈ کے لوگوں کو بلاتی تھی. تو ایک بار ہم نے ان سے پوچھا کہ فیشن ڈیزائننگ میں ترقی کا راز کیا ہے، تو وہ نان مسلم تھے. انہوں نے کہا ٹو اسٹڈی مسلم کلچر. یہ چیز مجھے چونکا گئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ مصر جائیے، آپ موروکو جائیے، آپ ٹرکی جائیے، ہر جگہ آرٹس اینڈ کرافٹ اور کلر اسکیم پر سارا چل رہا ہے. ان ساری چیزوں کا فائدہ بہت لوگوں نے اٹھایا، دوسری قوموں نے اٹھایا، لیکن ہم غریب ہیں تو کسی وجہ سے ہیں. آپ خود سمجھ لیجئے کہ کیوں ہیں. Thank you. To move forward, the concept of inclusiveness is in pretty much discussion these days, that every sector of life has to be included, and that is a point of marketing also, starting from the clothing industry. It has to be sustainable, it is renewable, how green it is. So the concept of inclusiveness is that celebrated in the market. At the same time, when it comes to different identities, when it comes to different religious identities or the cultural identities, then somehow hypocritically this concept of inclusiveness is not applicable at that way. At that time it is very clearly separated, or they are asked to move, they are sidelined or they are discriminated, keeping in mind that all these different cultures and different identities only will make India a democratic nation. So my question is to Advocate Huria.
She has been working at the Bombay High Court for the last 20 years. And in a field like law, where it is traditionally considered as something or a field that is not allowed for Muslim women, or there are certain restrictions, that is a concept that we have in general. What has been your experience, or what is the kind of a positive impact that you feel was able to be delivered in the field of law in the past 20 years? Check. Hello. Assalamu alaikum. जो सवाल उन्होंने किया है, आइडली जैसे उस्मा आपा ने भी कहा, इंग्लिश में है, हिंदी में इट्स मोर वी कैन रिलेट प्रॉबली बेटर टू दैट. सो ये मैं बताना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी ब्लेस्ड, जहाँ मैंने एक लॉ फर्म को ज्वाइन किया था. एंड जो इंक्लूसिवनेस का आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो वहाँ प्रैक्टिस था. सो इन द सेंस जो लॉ फर्म के जो ओनर थी एंड मेरे जो सीनियर्स थे, दो दे वर ऑल प्रैक्टिसिंग हिंदूज, बट दे रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स. दैट वाज माइंड ब्लोइंग. एंड ऑब्वियसली आई ऑलवेज बिलीव कि ताली दो हाथ से बचती है. सो बेसिकली ऐसे होता था कि उनको पता था कि आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वेरिन मैं 5 वक्त नमाज को फॉलो करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सो आप सब जानते हैं कि व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो वहाँ पे क्या होता है, यू हैव योर टाइमिंग्स. ओके, सो इट वाज लाइक 9:30 to 6:30. एंड हमारे जो क्लाइंट्स भी थे, दे वर लाइक द क्रीम ऑफ द लॉट, यू नो, दे वर लाइक I can't name them, but basically you have to understand they were the biggies, okay, whom we were dealing with. तो अब आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि चाहे हम कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, बी इट डॉक्टर्स, बी इट लॉयर्स, बी इट टीचर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो प्रिंसिपल्स, बेसिक्स एंड एथिक्स है, दे हैव टू बी इन प्लेस. इन द सेंस वी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल विद इट. आप समझ रहे? तो ऐसे था कि मैंने उनको पहले ही ज्वाइनिंग से पहले बोला था कि लिसन, आई कैन नॉट लीव माई नमाज. सो वो लोग इतने अच्छे थे कि बेसिकली मीटिंग्स भी होती थी तो वो मुझे बोलते थे आप जाइए. एंड जो क्लाइंटेल्स को भी हम केटर करते थे, अगेन विच आई एम टेलिंग यू, जो टॉप नॉच थे, उनको भी पता था, तो हम उनकी ऑफिस में भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते थे. अब आपको समझना है कि ये तो मैंने आपको एक शोबा बताया कि दिस वाज वन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशन. आज हम सब जानते हैं कि आप कोई भी फील्ड में चले जाइए, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. ओके, वी हैव टू बी कंपेटिटिव बट हेल्दी कंपटीशन. देखिए, पूरा जो दारो मदार होता है, अपार्ट फ्रॉम सी ब्लेमिंग व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव टू सी कि हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं. आज हमारा सबका प्रॉब्लम क्या है? ब्लेम गेम. हम सिर्फ ब्लेम करेंगे, ऐसे हो रहा है, हमारे सीनियर्स ऐसे कर रहे हैं, दिस पार्शियलिटी इज गोइंग ऑन. बट आपको समझना है, जब भी हम कोई भी प्रोफेशन करते हैं, वी हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट. जब आपने वो पैशन होगा, सो देन यू आर अनस्टॉपेबल. तो अब आपको समझना है, चाहे कोई भी यू नो ऑब्स्टिकल आए, ओके, या जो भी हमको लगते हैं कि हमारे फेलो कलीग्स अच्छे नहीं हैं, या हमको लगता है कि बहुत सारी यू नो जैसे कि यू नो पीपल आर यूजिंग यू, और हमको ऐसे लग रहा है पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू, सो यू हैव टू अर्न ऑल ऑफ दैट रादर देन सिटिंग एंड क्राइंग ऑन इट. बताते ना ओ को, जब कोई प्रॉब्लम आए, डोंट लुक एट इट एज एन ऑब्स्टिकल, यू हैव टू लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी. कि नाउ how can I work? My goal is what? My goal is to be the best teacher. My goal is to be the best doctor. My goal is to be the best dentist or whatsoever, XYZ, or the best lawyer. तो हर फील्ड में आपके पास चैलेंजेस आएंगे, ठीक है. आज की तारीख में जो माहौल भी चल रहा है, बट वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स. हम खुद इवेल्युएट करें. मेरा मानना है, आज हम घर के बाद स्टेप आउट करते हैं, वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस्लाम, सो वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स, एम आई ए गुड रिप्रेजेंटेटिव? बिकॉज हम जो भी एक्शन करेंगे, आपको समझना है, यू बीन टेकन एज अ पर्टिकुलर पर्सन फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिलीजन. आप जो करते हो उससे उस रिलीजन को देखा जाता है, उससे उस रिलीजन को जांचा जाता है. तो अब आपको समझना है, चाहे मैं कितने भी मेस्ड अप सिचुएशन में हूं, देखिए हर ताले की चाबी होती है, ओके, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, बट
am I doing it the right way? And आज अगर आपको inclusiveness भी चाहिए, जैसे हम बता रहे हैं, appreciation चाहिए, respect चाहिए, तो हमको एक first तो हमको भी देना पड़ेगा, okay? We also have to be very liberal in our mindsets, okay? Secondly, जब आप वो पैशन से काम करोगे, जब आप वो हार्डवर्क से काम करोगे, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है, टू बी ट्रू, टू बी ऑनेस्ट, नॉट डू बैड, आप समझ रहे हैं, जब हम उसके साथ काम करेंगे तो यू विल सी दैट थिंग्स विल बिकम इजी. आज रात है, कल सुबह जरूर होगी. थैंक यू. Thank you, Advocate Huria. Our next panelist is Hania Anwar. She is currently doing her master's in criminology and social justice from TIS Mumbai. She has also contested in the Students' Union election for Equal Opportunity Cell. So my question to Hania is, as we have already discussed how established these two panelists are in their own fields, it all comes from the university spaces, it all comes from the education institutions, where most probably in a direct approach, Muslim women identity is often questioned or is often challenged. Especially being in a premier institute like TIS, what has been your experience or the experience of other visible identity Muslim women in the campus spaces? Assalamu alaikum. So my name is Hania Anwar. I'm from Kerala. I'm a law graduate, and here I'm doing masters in criminology and justice. It comes under social work school. So, first of all, I'd like to begin by thanking the organizers to invite me to this program, because this topic is very much close to my heart, and I'm really happy to talk about it. Mostly, I'd be talking about my experience of contesting for election, wearing my identity on my sleeves and representing, politically being assertive as a Muslim woman in campus. So, the reason why representation of Muslim women matters in higher education institutions like TIS is, I'll give you statistics about the number of representation that we have currently in TIS. Like when you look into my class, I'm the only practicing Muslim in my class. And social work school has been established in 1930. And in the whole school, I don't see any faculty who's a Muslim woman. And even like if you, there are 200 plus students in the whole school, and rarely it's like 10 Muslim women we can see. And in that, only 1/3 of them are politically active in the campus. And also, if you look into the demography of the Muslim women in the campus, mostly they are from South, and specifically from Kerala. So what was very interesting for me was this, it has this special interest towards giving chances to marginalized section, students from marginalized section. When we have interview, they make sure that if we have a if we have an ambition and if we have a goal of giving back to our community, it is more likely a marginalized section student get into this. But it was very surprising for me to see not a single Muslim woman from Maharashtra, where this is established in Mumbai since 1930s. So I would like to see more of, like, I hope all of them are from Mumbai itself, right? You're all from Mumbai. So I hope there will be more representation from Muslim women in premier institutes like this. So I would like to share some of my experience in politically being active in as a Muslim woman. When I was in undergraduate, when I was in a law school, I contested in election, and by that time I was very new to Indian politics as a whole.
I didn't know how ugly hate campaigning could get. So I was subjected to labeling, being called fundamentalist and a terrorist, extremist, and all that. And I was also meted out with alienation by the whole campus. So, and I have always felt like, being a Muslim, we have less privilege to talk about the injustice that has been happening to Muslim community. We are viewed as someone like we can't, they will feel like we are being communal when we are rightfully raising the injustice happening against the Muslim community. So, and there is always this factor of being misunderstood. And you know, there were mean jokes about being Muslim. For example, I could say, like, I would randomly ask, is there bomb inside your hijab? Is there sword inside your bag? Which we are supposed to take it lightly. So why I'm sharing this experience is because it is important for Muslim women especially to educate themselves and to counter to such mean jokes, that is targeted at us. And when it comes to TIS, the situation was the same. The left parties were more overt and subtle in their Islamophobia, wherein right-wing parties were more expressive about their hate towards, Muslim organizations. So, as you can see, I hope everybody knows Nida Parveen. So we had two candidates last year. We were actually in a alliance with the Ambedkarite Student Union. We won the most number of votes, but we were meted out with hate campaigning, like we are going to turn this into an Islamist organization and all that. So, and this year, I stood for election, and the very alliance which were with us last year kind of, didn't want to associate with us this year because they gave in to the propaganda which was being spread against, like, they also, hello? Yeah. They also decided to stay away from us because it will affect their vote bank, because we were predominantly being called the fundamentalists. But Alhamdulillah, we stood, our dignity was being questioned. So we stood alone and we were able to get, a considerably good amount of votes. So what this election did to me was, it made me understand the importance of educating ourselves and being on the right side of politics. Like, we will be bombarded with a lot of propagandas. So only if we are able to counter it with our narrative, we can claim that space and we can represent our true politics there. So as I would like to stop by saying the quote of Hannah Arendt. Hannah Arendt said that if I am attacked as a Jew, I must defend as a Jew, not as a German, not as a world citizen, not as an upholder of rights of human or whatever. So I would like to stop by asking you all to, engage more in educating self and try to get into the premier institutions and claim the spaces that you have. Thank you. Thank you, Hania. So as something that she mentioned, it is unfortunate that at times when we believe that, or when we hope that people who are sharing similar experience that of us, like similarly sidelined or similarly discriminated, we hope at least they will be joining us or they will be embracing our struggle. But that is too being seen as carried away by the popular narrative that is being built against us.
So to go into a little bit deeper to Usman Haid Sahiba's works, you are also part of the World Coalition of Al-Quds. And how do you think, or what is your insight on how these counter narratives are being built at the international level? How women are coming together, Muslim women are coming together at the national and international platforms, and with the resolutions to go forward and bring the Muslim Ummah into the most development as possible. जो कोलिशन जो वर्ल्ड कोलिशन ऑफ विमेन, उसमें एक सवाल आया कि मुझसे कहा गया कि मैं इंडिया में जो वर्ल्ड इश्यूज़ हैं मुस्लिम विमेन के, उसको एलेबोरेट करूं और उनको वहाँ पर बयान करूं और उनसे लेडीज़ को इंगेज करें कि लेडीज़ इन इश्यूज़ को उठाएं। ये सवाल तो अपनी जगह सही था उनका, लेकिन एक क्वेश्चन बार बार आता था कि कैसे करें, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग मसाइल हैं और अलग अलग इश्यूज़ हैं। जैसे फ़लस्तीन है, वहाँ के मसाइल अलग हैं, वहाँ पर वो अल-कुद्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जो आप अल-कुद्स की बात कर रहे हैं, अल-कुद्स की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उसको अपनाने की बात कर रहे हैं, तो मसला जब शुरू हुआ था ये 60-70 साल पहले, उस वक्त की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में बहुत फ़र्क आ चुका है। फ़र्क ये है कि अब आपका जो ज़रूरतें हैं और आपकी जो डिमांड होनी चाहिए वो बेसिक नीड्स की हैं। पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आपको इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह सीरिया है या इराक़ है, इराक़ की औरतों में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है मेडिकल इश्यूज़ का, और उनका सीरिया की औरतें जो हैं उनका एक बहुत बड़ा इशू है कि उनको यानी वो डिलेमा सिचुएशन है, वो डिप्रेशन में है। लेकिन हैरत की बात यह है कि दुनिया का कोई भी कंट्री जो है वो ये दावा नहीं कर रहा है, वो खाने पीने की हद तक सही है, लेकिन उनका जो मॉरल सपोर्ट होना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कभी कभी कि भाई हमारे लिए भी खड़े हों लोग, हम खुद कहाँ करते हैं? हम अपने ज़मीर की आवाज़ को कहाँ सुनते हैं? कितना हम सोचते हैं? और इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे कि क्यों हो रहा है ऐसा। यानी मुसलमान जो है, ये तो अच्छी बात है कि मुसलमान जो है इस वक्त दुनिया का, मुसलमान औरत जो है दुनिया के सारे मीडिया का अट्रैक्शन मुसलमान औरत है। इस्लाम का अगर तारुफ कहीं होता है तो वो मुसलमान औरत के ज़रिए से होता है। ये अच्छी बात है कि बार बार चीज़ें निकल के आती हैं, कहीं पॉलीगेमी है तो कहीं ये है तो कहीं तलाक़ है तो कहीं एडॉप्शन है तो कहीं अलग अलग मसाइल हैं। हमारे पास रेडी आंसर्स नहीं हैं। ये मसला पूरी दुनिया का नहीं है, ये सिर्फ हम कर सकते हैं क्योंकि हम एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री में रहते हैं। दुनिया में अरब कंट्रीज़ हैं, उनके जो मसाइल हैं वो छोटे छोटे से हैं, लेकिन हमारे मल्टी डायमेंशनल हैं, मल्टी लैंग्वेजेस हैं, मल्टी साइकोलॉजीज़ हैं। तो हमें उसी तरह सोचना चाहिए और हम आदी हैं। मैं तो ये भी कहती हूँ कि दुनिया में जो कम्युनल हार्मनी का एक यानी जो कॉन्फ्रेंसेस होने लगी हैं पूरी दुनिया के अंदर, इंटरफेथ डायलॉग जो शुरू होने, दिस नॉट इंडियन आइडिया, दिस इज़ फॉरेन आइडिया, दिस इज़ अमेरिकन आइडिया, दिस इज़ यूके आइडिया, यूरोपियन आइडिया। क्योंकि वहाँ पर माइग्रेंट्स जाके आबाद हुए, वो जाके रहने लगे, तो उन्हें एक दूसरे के साथ टाई अप करने की ज़रूरत थी। हम तो यहाँ के बॉन्ड सिटीज़न हैं, हमें तो समझना चाहिए एक दूसरे को, एक दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ हमारे बॉन्डिंग क्या है, कैसी होनी चाहिए, वो हमें पता है। लेकिन हम ना ज़मीर की आवाज़ सुन रहे हैं ना एक्शन में आ रहे हैं। तो एक इसका जो यानी इसकी भी मैंने सोचने की कोशिश की कि 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, तो खामोश क्यों हैं और कुछ करते क्यों नहीं हैं? ये चंद लोग ही क्यों हैं? बार बार वही फेसेस क्यों आते हैं? तो उसका मुझे जो वो समझ में आया वो ये आया कि दुनिया में जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं, थिंकर्स हैं,
ان کو سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شہر چھوٹے رکھو اور سڑکیں چوڑی کرو. کتنی اچھی بات ہے, کتنی اہم بات ہے, کتنی کہنا چاہیے ریئلسٹک بات ہے. مگر ہم یہ نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہو کہ میری موت ابھی آنے والی ہے, کتنا قریب ہے, تو میں چاہوں گا کہ ایک درخت لگا کے جاؤں. تو انوائرمنٹ کے لیے, انوائرمنٹل سیکیورٹی کے لیے اس سے اچھی کیا بات, کیا مثال ہو سکتی ہے. 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. چاند پہ پانی کی آج خبر دے رہے ہیں. چاند پہ پانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ چاند پہ پانی ہے. ہمیں جو ہے وہ اب ایک ریولیوشنری تھنکر بننا پڑے گا, جیسے ہم تھے پہلے کبھی 700 سال پہلے. بیچ میں ہمیں گیپ آ گیا بہت بڑا. ہم نے کانٹیننٹس جو ہے فتح کیے ہیں, کانٹیننٹس فتح کیے ہیں. اسپین تک جا کے, میں اسپین گئی ہوں, وہاں جا کے دیکھ کے آئی ہوں, ابھی تک مسلم نشانیاں ہیں وہاں پر. ہم لوگوں نے سوچنے کے دائرے محدود کر دیے, اپنے آپ کو قید کر لیا کہیں میں. کہیں آئیڈینٹیٹیز ہم نے صرف یہ بنا دی. صرف یہ آئیڈینٹی نہیں ہے, دس از ویری ویری سیکنڈری تھنگ. ہماری آئیڈینٹی کچھ اور تھی. ہماری آئیڈینٹی علم تھا. علم کی وجہ سے ہماری وسعت فکری تھی جو پورے اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی تھی کہ اسلام صرف اتنا کوزے میں بند نہیں ہے. تو ایک جو لیڈیز کر سکتی ہیں کہ اپنے آنے والی جو اپنی نسلیں ہیں ان کی تربیت اب ایک نئے ڈھنگ سے کریے. وہ نیا ڈھنگ کیا ہوگا کہ جیسے چھوٹے شہر بنانا. یہ ہندوستان کی ضرورت بھی ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ ایک ہی شہر میں 1.5 کروڑ لوگ گھسے جا رہے ہیں تو پورا سسٹم جو ہے خراب ہوا جا رہا ہے. یہ فلڈ کیوں آ رہے ہیں, یہ ارتھ کویک کیوں آ رہے ہیں, یہ سارا ایک ریزن بن رہا ہے. آباد کریں جا کے دوسری جگہوں کو, وہاں پہ پانی انتظام, روزگار کے انتظام, سکون کی فضا. جتنے بھی دنیا میں فلاسفر ہیں, ابھی بھی ہیں یا پہلے تھے, وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے. آپ گھروں کو دیکھیے کہ چھوٹے سے جو گھر کے اندر ہم قید ہو گئے. ایک فلیٹ سسٹم ہمیں کس نے دیا؟ یورپ نے. ہندوستان کے کسی بھی اسٹیٹ میں چلے جائیے, ہندوستان کی ہر اسٹیٹ میں آپ کو گھر جو پرانے نظر آتے ہیں وہ 3 طرفہ ہوتے ہیں, ایسے بنے ہوئے, ایسے مکانیت ہوتی ہے, بیچ میں آنگن ہوتا ہے, پھر باورچی خانہ ہوتا ہے. چاہے کلکتہ جائیے, چاہے کیرلا جائیے, میں نے سب جگہ کے گھر دیکھے. اس سے کیا تھا کہ ہمیں موقع ملتا تھا کہ ہم اسلام کی جو اصول ہیں, احکام ہیں, ان کو پریکٹس کریں. آپ کو زکوٰۃ کسے دینی آپ کو نہیں معلوم ہے. وہ جو 3 کلومیٹر دور پہ رہ رہی ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہے اس کے فائنینشیل پرابلمس کیا ہیں. لیکن جب یہاں رہ رہے ہیں تو آپ ہر وقت ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے, آپ کے پاس فیملیز رہ رہی ہیں. تو جوائنٹ فیملی سسٹم جو تھا وہ ایک بہت بڑی رحمت تھی. اس سے جو ایک ہیلنگ ہوتی تھی, ایک دوسرے کا خیال, زکوٰۃ کی ادائیگی, اور کیا کہتے ہیں کہ شیئرنگ, کیئرنگ ایک دوسرے کی, اور انسپریشنز ایک دوسرے کے, ڈسکشن آن مسائل, وہ موقع ہی نہیں ہے. ہم بات ہی نہیں کرتے, ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم اجنبیوں سے ملتے ہیں, مہمان خاطر اپنے رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہے. یہ تو ہندوستان کی ہر کمیونٹی میں تھا, لیکن یہ ٹوٹ گیا. میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو اب آپ جیسی بچیاں ہیں وہ ایک نیا پلان لے کے آئیں کہ اب جو ہے ہمیں گھر, اب آرکیٹیکٹ بھی ہوں گی اس میں, اور آپ میں بلڈرز بھی بن سکتی ہیں, انٹیریئرز بھی ہو سکتی ہیں. پلان کریں کچھ نیا, کچھ اچھا پلان کریں کہ جیسے پہلا تھا دور جس میں ہمیں سوچنے کی اور جلا ملتی ہے, ایک یعنی ترقی کرنے کا جو ایک انسپریشن اور جوش آتا ہے, وہ چیز ہونی چاہیے. تو کچھ کریں گے تو کچھ پائیں گے. ہم بلا وجہ جو شکایت کرتے ہیں تو ہمیں, میں نے ایک گاؤں دیکھا ہے بنگلور کے پاس ہے, وہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہیں. پیپلز ٹری کے نام سے ایک گاؤں بسایا, فائر فلائز پیپل ٹری آرگنائزیشن ہے, فائر فلائز. اس میں جو ہے انہوں نے رومی کی رباعیاں, گاندھی جی کی سیئنگس اور غزالی اور سب کی جو ہیں وہ سیئنگس لگائی ہیں, اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے روم بنائے ہیں. بہت خوبصورت ماحول ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ کھانے پینے کا سیلف انتظام ہے, آپ خود پکائیے خود کھائیے. وہ لوگ آفر کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئیے, کتابیں لکھیے, آرٹیکلس لکھیے. تو آپ دیکھیے کہ جتنے بھی فلمی لوگ ہیں ان کو فلم کا اسکرپٹ لکھنے کے لیے, حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہوتا, لیکن اسکرپٹ لکھنے کے لیے انہیں کوئی بہت ہی پرسکون اور بہت ہی کہنا چاہیے پرفضا جگہ چاہیے ہوتی ہے. گانے لکھنے کے لیے بہت پرفضا جگہ. تو آپ اچھی کتابیں کیسے لکھیں گے؟
اس ماحول میں نہیں لکھ سکتے, اس ماحول میں ہم نہیں کام کر سکتے. تو میری شاید بہت نان پریکٹیکل لگ رہی ہوں گی بات, لیکن 20 سال بعد آپ کو یہ صحیح لگیں گی. Jazakallah Uzma Sahiba. Coming back to Advocate Huria, I want to ask regarding your specific work within your firm, Taqwa Legal. There have been different workshops that are being conducted on different issues concerning women in general and Muslim women in particular. What do you think is the necessity of legal awareness in today's socio-political condition, and how it is being conducted within the firm? Just to give you all a little briefing, my firm's name is Taqwa Legal, and उसमें मैं specialize करती हूँ Muslim personal law में and general commercial documents as well as a lot of statutory and regulatory compliances. Side by side, alhamdulillah Allah ताला ने जो capabilities या abilities दी है, so एक goal है कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो मुझे पूरी country humankind जिसको मैं नफ़ा पहुंचा सकूं, I want to do that. So simultaneously I keep doing a lot of free legal awareness series. Okay, these free workshops which are basically on the issues that are happening. जैसे मैं आपको बताऊं, जब अभी UCC latest है, तो UCC awareness create करने के लिए, because क्या है very unfortunate situation जो मुझे अपनी कम्युनिटी का बोल दीजिए या अपने सिटीजन्स का भी बोल दीजिए, लगता है दे आर नॉट वेल रेड. आज हर एक को ऐसा है कि मेरा घर अच्छा चल रहा है, आई हैव अ गुड जॉब, आई हैव अ गुड स्पाउस, आई हैव अ कार, तो हम सब मुतमईन है. बट जैसे कि साइकोलॉजी में भी है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. तो आज जो इन्वायरमेंट चल रहा है, जो फिज़ा चल रही है, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो उसमें से इट्स बहुत ज़रूरी है कि हम सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पेश करें. अब अपने आप को पेश कैसे करेंगे कि मुल्क की प्रोग्रेस हो, हम सब की जो लाइफस्टाइल्स हो, या दूसरे फेलो बीन्स को भी हमसे नफ़ा हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ें. अब जैसे कि कुरान की आयत का भी पहला लफ्ज़ क्या था, इक़रा, पढ़िए. तो नॉलेज हमको हासिल करना है, चाहे हम कोई भी स्फीयर में हो. अनफॉर्चुनेटली आज हम कितने एजुकेटेड लोगों से मिलते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है, आई एम नॉट अ लॉयर सो आई डोंट नो लॉ. बट अब आपको समझना है सिर्फ लॉयर्स के लिए लॉ नहीं है. मे बी लॉयर्स को interpret it in a better manner जो शायद नॉर्मल पब्लिक ना कर पाए. बट आज जो हमारे मुद्दे चलते हैं सब आर बेस्ड ऑन लॉ, बट हमको पता ही नहीं है कि मेरा लॉ या जो दुनिया का हमारे जो कंट्री का कानून है वो हमको क्या राइट्स दे रहा है एज अ सिटीजन. मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या है, मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है. अब यूसीसी भी आया तो पीपल आर थिंकिंग विद अ वेरी क्लोज माइंड, बस उसको एक रिलीजियस इशू बना के रख रहे हैं. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रिलीजन. Religion is a part of it. Religion का जो right to profess your religion comes under the fundamental rights जो बुनियादी हुकूक है जो खुद हमको हमारा Constitution of India देता है. India is a secular country. India की pluralism है, India का culture maintain करना है. There are minority communities, there are tribal communities. So there has to be integration. So we all have to think out of the box, which is the need of the hour. Secondly, आपको मैं बताऊं, जब CA का माहौल आया था हर कोई भाग रहा था कि ठीक है हमारे डॉक्यूमेंट्स प्लेस में होने चाहिए. उस वक्त सबको फिक्र थी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर टू प्रूव माय सिटीजनशिप. अब वो हॉल्ट हुआ है तो हमने भी फुल स्टॉप लगा दिया. आपको समझना है दोज डॉक्यूमेंट्स आर एनीवेज गोइंग टू बेनिफिट यू, नुकसान तो उनसे होने नहीं वाला है. सो हमने क्या किया, हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि मैं खुद पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट कर लूँ, अपडेट कर लूँ, और नहीं है तो अप्लाई कर लूँ. एंड एट द सेम टाइम आई हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अराउंड. अच्छा, अब मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स देती हूँ. मूवीज़ का देखिए आपको बताती हूँ. जैसे कि केरला स्टोरी आई, ये कश्मीर फाइल्स आई.
आपको पता है मेरे जो कॉन्टेक्ट्स में मुस्लिम्स हैं, एजुकेटेड है, गुड फैमिलीज है, दे आर आस्किंग मी, ओ माय गॉड दिस हैज हैपेंड, दे डोंट इवन नो व्हाट द रियलिटी इज. फिर जजमेंट पास हुआ सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे उन्होंने केरला स्टोरी का कहा ना कि यू हैव टू पुट दैट डिस्क्लेमर दैट इट इज जस्ट अ फिक्शन एंड इट्स नॉट रियलिटी. तब जाके लोगों ने इस बात को समझा. आपसे एक शेयर करना चाहूंगी कि जैसे आप जानते हैं आई एम फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी, तो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स भी है, ऑब्वियसली आई वुड बी हैविंग नोइंग मेनी लॉयर्स एंड वी आर ऑफ द सेम फ्रेटर्निटी. इनिशियली जब मैं उनको इंडिपेंडेंट मीडिया के आर्टिकल्स या वीडियोस भेज रही थी जो प्रूव कर रहे थे कि नो केरला स्टोरी इज नॉट ट्रू एंड ऑल दैट, मच बिफोर द लॉन्च ऑफ द मूवी एंड ऑल, माय लॉयर फ्रेंड्स weren't रेडी टू एक्सेप्ट. अब जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सो दे आर ओके. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज पोलराइजेशन इतना हो गया है, आज हेट इतना फैल गया है. कितने आप में से ऐसे हैं जो ये जानते हैं अबाउट भगवा लव ट्रैप कह दीजिए, सैफरन ट्रैप कह दीजिए, या जो लव जिहाद कहते हैं. लव जिहाद के तो कितने लॉज भी पास हो गए हैं डिफरेंट स्टेट्स में. बट डू यू नो आफ्टर सेवरल स्टेट जिन्होंने गवर्नमेंट्स ने इस पे बाकायदा इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, एंड देयर इज नथिंग एज लव जिहाद, इट्स अ फेक कंसेप्ट. हाउ मेनी ऑफ अस नो दैट? तो अब आपको समझना है. अभी कर्नाटका हिजाब राव आया, हम मुस्लिम्स मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि ओके हिजाब का क्या है. लॉ तो छोड़िए, हमको दीन भी नहीं पता है कि हिजाब इज मैंडेटरी इन इस्लाम. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, फंडामेंटली हमको बहुत पढ़ना है, फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेस पढ़ना है. जब आप पढ़ोगे, आप समझोगे तो अमल कर पाओगे ना, एंड आप अपने आप की भी हेल्प कर सकोगे एंड एट द सेम टाइम आप सबकी भी हेल्प कर सकेंगे. ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट कीपिंग द टाइम सिर्फ आपको एक क्रिस्प में बताना था कि ये जो मुद्दे हैं, जो बेसिक्स अभी हुए हैं. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट है जो इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है कि मुस्लिम औरतें जो हैं सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड है, सबसे ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी फेस करती है. अब आपको समझना है ये कौन ट्रैप में आएगा जो वाकई इस्लाम को नहीं जाएगा. यूसीसी के बारे में भी जैसे उठा रहे हैं, पॉलीगैमी उठा रहे हैं, निकाह हलाला उठा रहे हैं, इनहेरिटेंस का उठा रहे हैं. और जो ईमान वाला है वो तो बेसिक फंडामेंटल्स जानता ही है कि जो अल्लाह ताला ने कानून उतारा है, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग मैन मेड. हम किस डिवाइन लॉर्ड को, या जो हमारी डिवाइन किताब है जो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत से आई है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं. जो इजमा भी होता है, जो कंसेंसस ऑफ उलेमास भी होता है, दैट्स इट आल्सो बेस्ड ऑन द कुरान एंड सुन्ना. सो हमारी ये सोच होनी चाहिए, हमारे पास जवाब नहीं है ओके, मगर उन जवाब को भी हमको ढूंढना है, सही जवाब ढूंढेंगे. बिकॉज मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया, हम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस्लाम है. नाउ हम सबको वो इवेल्युएट करना है, हाउ मच डू आई नो इस्लाम, how much am I following it, and how much am I propagating it? Am I a good representative of Islam or am I a bad representative of Islam? तो हमको ये समझना है कि जब हम वेल रेड होंगे, जब हमको पता चलेगा कि ये मैटर्स आ रहे हैं, ये इश्यूज, और ये सब आपको अफेक्ट करते हैं. बिकॉज बेसिकली हिजाब भी आया तो आपको समझना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको चॉइस भी देता है, राइट ऑफ चॉइस भी है. सो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत, जैसे कि इन द सेंस हमको जब रियलाइज होगा कि जब लॉ ऑफ द कंट्री मुझे ये राइट्स दे रहे हैं, आई हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, आई हैव दिस राइट, आई हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑब्वियसली इन द राइट मैनर. बिकॉज हमको जब भी स्पीच भी करनी है, वी ऑलवेज हैव टू डू समथिंग विच इज इंटीग्रेटेड, विच यूनाइट्स ऑल ऑफ अस. आप समझ रहे हैं? बिकॉज हम ये कंट्री में रह रहे हैं एंड वी वांट टू लिव अ वेरी गुड लाइफ एज वेल एज लीव अ लेगेसी फॉर आवर जनरेशंस, कि उनकी भी जो लाइफ हो बहुत अच्छी हो. अब आज की तारीख में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा मुझे जो लगता है, जो सबको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली बीइंग वेल वर्स्ड विद व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वोटिंग, दैट हमको ये समझना है, हमारी डेमोक्रेसी हमको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देती है जो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है. कितने लोग बड़े डिसहार्टेंड हो गए हैं कि हमारे एक वोट से क्या होता है. एक वोट से जमीन और आसमान का फर्क वाकई हो सकता है. तो प्लीज जिनके वोटर्स आईडी कार्ड नहीं है वो बनाएं, जिनके हैं उनको अपडेट करें, एंड दूसरों में भी ये अवेयरनेस फैलाए कि दिस टाइम हम जो अडल्ट्स हैं, वी हैव टू चूज द राइट people who are best for and better for the entire country, entire nation, for the progress of all of us together.
So thank you Samar and GIO for inviting us so that हम आके आपसे थोड़ा कुछ share कर पाए. And thank you very much and all the best to all of you. Thank you. Thank you, Advocate Huria. Coming back to Hania, as you were mentioning, the political representation of Muslim women in the central universities or Muslim students in the universities, it is, we can go long back for that, like for decades. There have been eminent student leaders in the universities. But in recent years, what we witnessed is that a change in the political representation, not only being in the opposition side, not only raising the questions, we were able to be on the other side. We were able to be on the power positions, being part of the students' union. I can recall the cases of Afreen Fatima, who got elected as the councillor in JNU in Delhi. And as Nida was, she was mentioning about Nida Parveen, she got elected as the vice president of TIS Students Union. In IFLU, we were able to win as a general secretary position. So unfortunately, even from my experience, what I found is that the larger circle or the larger majoritarian community, they only expect the Muslim women or Muslim students to be there in the opposition. They expect us to continuously raise questions or conduct protests and get arrested and get away from the university. But once the Muslim students are on the position, on the power positions, as part of the students' union, then the story of struggle is entirely different. So what has been your experience being part of the students, the alliance of the students' union, which won the election last year? What has been the insights and the inputs that we were able to put forth? Okay, so as Samar rightly pointed out, we never had enough experiences of being in the power, right? So one of the successful example of being in power that I have experienced was in TIS last year, when we were able to show that as a Muslim women, we have agency to speak for ourselves. Even the, even the brightest mind, well-read people had this prejudice that we can't think for ourselves. We are oppressed. They had that prejudice. So by coming into power with most number of votes, we were able to show and speak for ourselves and show that we have agency to take decision for ourselves and for the whole campus. And one of the other things that we were able to do by being in power was, as our respected panelist had mentioned about how movies are polarizing people. Being a Kerala Muslim woman, I have experienced that in attaining housing this year. Like, I was denied of housing because of being a Muslim woman from Kerala. So there's a lot of intersectionalities there. So because of the student union and because of the presence of our candidates in the union, they introduced a system of providing hostel services for socially disadvantaged students, which is not even imaginable if our candidates was not there. Like, we had to represent there. There's this saying, like, if in a negotiation table, we are not represented, we'll be the menu. We'll be the one being eaten. So to represent us, we have to be there in the negotiation table. So that successful policy they were able to implement. And the other thing is, they started this process of documenting the identity-based discrimination within the campus that Muslim students as a whole is experiencing, as like how I have explained earlier about how hate speech was, targeted at me. So they began this process of documenting. And this is similar to my research topic. My research topic is about effects of hate speech on politically active Muslim students in Kerala campuses. So what I found out through data collection and literature review was there is a dread of literatures on this subject. When in fact, at this time, at this political situation of our country, there's a lot of hate speech targeted against Muslims. Then also we don't have enough literatures studying about the effects of
hate speech on Muslim youth. And what I found through their data collection is a lot of Muslim students have normalized the hate, which shouldn't be the case, right? We shouldn't normalize this case. So what I felt was, by studying in a premier institute like this, if there is a need of research papers, who have to bring more researchers in future? Who? Us, right? Us who experience this, these kind of discriminations. So I would encourage all of you to get into such premier institutions and try to give and learn, acquire skills as much as possible. And may Allah bless you to give back to the community, whatever you have learned. Thank you. Jazakallah. With this, we're coming to the concluding session of the panel discussion. I just want to mention the deciphering of dilemma, the topic of panel discussion. We were intending to put forth whatever the panelists were actually mentioning. For ages, Muslim women are expected to choose between the religion or empowerment, between her freedom or her identity. So without having no choice, they were forced to make something out of the opportunity which was given in front of them. Apart from that, what are the opportunities we have? By being in different field, by being the experts of different field, all the panelists put forward their experience and their opportunities and the positive impact they have created in the society. So this itself is the image that we wanted to put forth. We know the story of Bibi Zuhra. A 100-year-old madrasa was burnt last year by hate mongers in Bihar Sharif, but which was built by Bibi Zuhra, who has contributed a Waqf estate with all her assets, which is valued over crores, only for the women education, only for the education of girls. So that has been the legacy of Muslim women in India, and that itself is what we are intending to put forth in the history as well. So now for the concluding session, I invite Rahmatun Nisa Sahiba, the Secretary, National Secretary of Jamaat-e-Islami Hind.